I'll start recording this session. Yeah. So our very first chapter is very easy. बहुत easy है, बहुत simple है. It is field visit. Let me take you all to the first chapter. Yeah. So it is a field visit. Fine. Now, what do you mean by field visit? कभी गए हो आप लोग स्कूल से? Anyone who can share their experience regarding field visit? Anyone? Aditya, Ayushi, Keegan, Roshan, Tanishka, Vaishnavi. किसी को फील्ड विजिट आप लोग गए हो क्या पहले? फील्ड विजिट पे लेके ही नहीं जाते थे. अरे रे, ये हमारे जैसा सीन हो गया. हम लोग को भी कभी नहीं लेके गए. हम लोग वाटर पार्क वो सब पे जाते थे. हाँ, कहाँ पे जाते थे? वाटर पार्क्स. पिकनिक, मतलब पिकनिक. फील्ड विजिट नहीं लेके गए. बराबर, same how was the situation, but what basically field visit is, picnic ऐसा होता है, it is for our fun, we go there to enjoy. Field visit sort of same होता है, but it is for educational purpose also. Okay, field visit का एक main aim क्या होता है, that we go there to collect you can say information regarding that particular place. जो place पे जा रहे हैं उस चीज से related information या कोई technical terms होते जो पहले ही आपको बता दिए गए होते, like मे बी आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ना है या वहाँ का टोपोग्राफी पढ़ना है, यू नो, एवरी सॉर्ट ऑफ थिंग. तो दैट इज फील्ड विजिट. तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर इज वेरी इजी. दिस इज लाइक अ कन्वर्सेशन, जैसे हमारे इंग्लिश में होता है कि वी हैव यू नो डायलॉग्स एंड स्टफ. तो ये भी वैसा ही है. इट्स इंटरेस्टिंग. फील्ड विजिट. Rahul is going on a field visit with his classmates and school teachers from Naldurg in Osmanabad district to Alibag in Raigad district. Okay, तो इनकी field visit कहाँ से कहाँ जा रही है? These guys are from Naldurg, if you can see in the map, and then they are going to Alibag. तो नालदुर्ग से अलीबाग. तो अलीबाग उनका फील्ड विजिट का डेस्टिनेशन है, and these guys are traveling from Naldurg. The school has engaged a special bus from state transport for this purpose. Okay, कि state transport जो रहता है उनके पास से बस, मतलब जो ST बोलते हैं वो. Rahul and his classmates have organized this visit under their teachers' guidance. Let us find how the students are experiencing the changes occurring in the relief, soil, vegetation, and human settlements as they travel from Naldurg to Alibag. Also, बच्चा लोग, अगर आप लोग के पास टेक्स्ट बुक नहीं भी रहेगा ना, तो भी है ना बुक पेन लेके बैठ जाओ, बिकॉज दिस चैप्टर हैज टेक्निकल टर्म्स के मीनिंग. अगर आप लोग को वो आ गए ना तो इजी है, मतलब while you are writing or you know while you are revising, it would be easy for you. So make sure you are writing down the meanings. If you don't have textbook, fine, एक book ले लो, pen ले लो, geography chapter 1 field visit meaning ऐसा लिख देना. ठीक है. So the very first, what are they tying? Let us see how the students are experiencing the changes. As I said earlier कि कोई एक main intention से आप जाते हो. तो यहाँ पे क्या है, वो लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं? They are going to study about relief. Now what do you mean by relief? Relief is जो हाइट्स में डिफरेंस होता है ना वो. तो यू कैन राइट ओवर हियर, रिलीफ इज डिफरेंसेस इन हाइट्स बिटवीन हाई एंड लो पॉइंट. जो हाई एंड लो पॉइंट में जो डिफरेंसेस होता है ना हाइट में, दैट इज कॉल्ड एज रिलीफ. फाइन. अरे एक मिनट. या soil, vegetation and human settlements as they travel from Nalduk to Alibag. तो वो लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? They are going to study about relief, the kind of soil available there, the kind of vegetation. What is vegetation? Anyone? Vegetation का मतलब बता सकते हो? Anyone? मैम वेजिटेबल. नहीं रे बाड़ा, नहीं. इट इज पैच वर्क ऑफ प्लांट्स. मतलब क्या, बेसिकली प्लांट्स के जो स्पीशीज होते हैं ना, मतलब बेसिकली अपन जाते हैं ना घूमने को, तो जो प्लांट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, उनके स्पीशीज वो. तो यहाँ पे वेजिटेशन का यू कैन राइट दैट पैच वर्क ऑफ प्लांट्स स्पीशीज, पैच वर्क ऑफ प्लांट्स स्पीशीज across the landscape.
Okay, कि landscape is where you are traveling. आजू बाजू का places, तो जो plant की जो species है different kinds of, that is called as vegetation. And human settlements, कि वहाँ पे human settlements कैसे है? Like if you take urban areas का example, तो urban में you will find we have buildings है and बहुत सारा अलग अलग चीज है. But when you go to rural, तो rural का it's a little different. You'll find houses made up of soil, or सॉइल मिट्टी का बना रहता है. यू इवन हैव काउ डंग फॉर द सेम. तो अलग अलग ह्यूमन सेटलमेंट्स देखने मिलेगा. सो वही वो लोग देखने वाले. तो दीज 4 पॉइंट्स आर द मेन थिंग्स: रिलीफ, सॉइल, vegetation and human settlements. Go through the following conversation between the teachers and the student. ठीक है, यहाँ पे क्या दिया देखो. beside personal luggage and iCards, students are carrying these following items. Okay, that they are carrying their luggage and iCards, but at the same time they are carrying a bag, a water bottle, maybe diary to note something, first aid kit, map regarding the same. You have compass, you have cap, camera for photographies and durbin. ठीक है, fine. Yeah, we'll start. So it is day 1. They are going at 6 a.m. Teacher: dear students, now we have left Naldurg and are on our way to Solapur. So if you see on the map, ये लोग यहाँ नालदुर्ग से जा रहे हैं and they are on their way to Solapur. The Solapur is their next destination. दिख रहा है स्क्रीन पे, यहाँ पे नालदुर्ग है उनका, the time where they are leaving, and over here we have Solapur, which is their एक halting point बोलते हैं ना वैसा. Yeah, we will have a breakfast at Solapur and lunch near Sinhagad, Pune. ठीक है, तो वापस यहाँ पे देख लेते हैं. यहाँ पे near Solapur they are going to have their breakfast, and यहाँ पे सिंहगढ़ में पुणे में they'll have their lunch. ठीक है, नालदुर्ग से निकले, Solapur breakfast point, सिंहगढ़ lunch point. Now, all of you should observe both the sides along the roads and note the observations in notebooks with reference to this points. ठीक है, तो उनकी मैम क्या बोलती है that you have to observe certain things while you are traveling. What are those certain things? First तो हम लोग ने देखा आपको relief के बारे में लिखना है. The differences is high point and low point. Water bodies के कोई lake, well, waterfall कुछ दिख रहा है वो आपको mention करना है. Vegetation again, as I said, it is plant species. Soil के बारे में, if you find any difference in the soil. Agriculture, human settlement and settlement patterns. Okay, Rahul: yes madam, I can see that we are experiencing undulating topography. What do you mean by undulating topography? Anyone? Undulating क्या होता है? टोपोग्राफी तो चलो सबको पता हो गया. व्हाट डू यू मीन बाय undulating? सो undulating का मीनिंग आप लोग लिख सकते हो. इट इज वेव लाइक स्ट्रक्चर. वेव लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं ना वो. तो undulating is wave like structure. So what is Rahul saying? That yes ma'am, I can experience a wave like structure, and somewhere in between we can find plains. We can also see some agriculture fields. अभी जैसे मैम ने बोला that you need to observe, तो सब बच्चे लोग अपना ऑब्जर्वेशन बोल रहे. तो राहुल इज सेइंग दैट या आई कैन सी undulating topography, that is wave like structure, and I can also see certain plains. Plains is plain land, and we can also see some agriculture fields. समझा यहाँ तक? फर्स्ट पेज क्लियर है सबको? Yes, Anyone miss. with any doubt? No, ma'am. No, miss. Okay. Sakshi, now another student is saying her experience. We can see small settlements along the road. Settlements मतलब वस्तियाँ बोलते हैं ना जहाँ पे people live. So they are telling that yeah, we can see some small settlements. We can also see tea stalls, dhabas, petrol pumps and other shops. This is normal, right? While we are traveling, we see many different things. We see certain shops, we see malls, we see petrol pumps, dhabas. तो वही बच्चे लोग अपना experience बता रहे हैं. Teacher: yes Meena, your observation. So teacher Meena को पूछते हैं what are your observation? So Meena is replying, madam, are we going down the slope? तो उसको ऐसे फील हो रहा है कि हम लोग नीचे कहीं पे जा रहे हैं क्या. अपन पता है ना, जैसे अगर अपन कोई माउंटेन एरिया चढ़ रहे तो वी हैव घाट से हम लोग चढ़ते हैं तो अपन को पता चलता है दैट या हम लोग माउंटेन चढ़ रहे हैं. इन द सिमिलर वे शी थॉट कि क्या मैम हम लोग कहीं स्लोप से नीचे उतर रहे हैं क्या. सो टीचर सेड yes, correct. Now we are in the southern part of
Balaghat ranges. They are in the eastern offshoots of the Sahyadris. Keep looking at the map given to you and the topography outside. You can easily see the changes occurring in the landscape. Now tell me about the settlement patterns and housing types, okay? तो मीना ने क्या बताया, उसने टोपोग्राफी चेंज के बारे में बताया कि पहले कैसे उसको ये फील हो रहा था दैट वी आर गोइंग डाउन टू द स्लोप, एंड देन टीचर आल्सो सेड द सेम थिंग दैट आप लोग आपका मैप रिफर करो, जो मैप आप लोग लेके आए हो, एंड एट द सेम टाइम एक्सपीरियंस द टोपोग्राफी आउटसाइड, सो यू विल अंडरस्टैंड कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं लैंडस्केप में. नाउ शी इज टेलिंग कि अभी तक तो आप लोग ने ये टोपोग्राफी के बारे में मुझे बता दिया, फाइन. नाउ टेल मी समथिंग अबाउट द सेटलमेंट पैटर्न्स एंड हाउसिंग टाइप्स के इसमें आप लोगों को क्या फर्क दिख रहा है. सूरज, मैडम, इन रूरल एरियाज वी सी हाउसेस इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग द रोड. द वॉल्स ऑफ द हाउसेस आर मेड अप ऑफ क्ले while use of mud and wood is visible in making the roofs. Okay, so Suraj is telling rural area जो गांव साइड का एरिया है वहां पे we have seen the houses which are made up of clay. Okay, यहाँ पे figure 1.4 is shown to you that यहाँ पे it is made up of clay and mud and wood is also visible. के कभी कभी कैसे छपरे पे वो लोग wood डालते हैं यहाँ पे. if you see properly, सी यहाँ पे ये जो पैटर्न है ना, ये उतना इनका वुड स्ट्रक्चर का डिजाइनिंग है. दिस वन, या सो दैट इज बेसिकली वुड. वैसा तो मड एंड वुड का बना है, तो उसका ये एक्सपीरियंस था. किसका? सूरज का. एंड ही इज टेलिंग दैट आई कैन सी दैट हाउसेस आर मेड अप ऑफ क्ले एंड इवन वुड इज यूज्ड फॉर मेकिंग roofs. Renuka, in this area we can mainly see grass, sorry. Trees which have shed their leaves are visible in some places. Okay, so she is telling, she is adding point कि yeah, in this rural area we can see dry grass, सूखा हुआ grass बोल सकते हैं, and trees which have shed their leaves are visible in some places. कि जो trees उनका पूरा leaves सूख मतलब ये हो गया, shed हो गया, मतलब सब निकल गया है ना, ऐसा सूखा with only stems is visible. Teacher, good observation, Suraj and Renuka. Such settlements are called as linear settlements. Why? Because Suraj ne bola na, we can see houses in a straight line along the road. And linear settlements, I guess आप लोग ने पहले भी पढ़ा होगा geography में, right? So she is telling, teacher is saying that yeah, such kind of observation is known as linear settlements. We have learned that in 7th standard. मैंने बोला ना पहले भी आप लोग ने पढ़ा होगा. The houses which you saw are called mud and wood houses. तो जो सूरज ने बोला that mud and wood houses है, तो उसको क्या बोला है? That is called as डाबियाची घरे. This is again in Marathi. Just give me 1 minute. Bye. बोला नहीं जरा सेव ना मैं प्लीज. तैयार क्या से डब्बे. So that is called as Dabyachi Gare, the one which are made up of mud and wood houses. These are the traditional houses built by a specific method. एक ही मिनट है बच्चा, आ नहीं आते हो. We have learned that in 7th standard, yeah, the houses which you saw are called as Tabyachi Ghare. These are the traditional houses built by a specific method. The vegetation here belongs to dry deciduous type. Okay, कि ये अलग type के houses है. And यहाँ का ये कैसा है? Vegetation, it belongs to dry deciduous type. Now, what do you mean by deciduous? Deciduous word भी अपन ने बहुत बार geography में पढ़ा है, right? What do you mean by deciduous? Anyone? This word is something which we have, heard many a times in geography. The deciduous मतलब क्या होता है? It is basically trees which looks like its leaves, like मतलब trees basically जिसका leaves every autumn में गिर जाता है. वैसे तो autumn में trees कैसे हो जाता है वैसा. So that is called as dry deciduous type. तो वो वही बोल रहे कि यहाँ पे vegetation it belongs to dry deciduous type and they shed their leaves during a specific season. कि वो अपने leaves एक particular season में ही shed करते हैं.
Next, after some time, they reach सोलापुर city. तो जहाँ पे उनका breakfast point था सोलापुर, वहाँ पे वो लोग पहुँच जाते हैं. Yeah. After some time, they reach Solapur city. Teacher. Now we have reached Solapur city. In urban areas, the population density is high. We see multi-stored houses. They are made from a mixture of cement, sand, rubber, and water. They are constructed using bricks. Shops with modern amenities like shopping malls, big restaurants, etc. are found along the roads. तो पहले हम लोग ने रूरल एरियाज का देखा राइट कि हाउसेस क्ले और मड के बने थे. नाउ टीचर इज टॉकिंग अबाउट अर्बन एरियाज. सोलापुर पहुंच गए वो लोग. सो नाउ टीचर इज टॉकिंग अबाउट अर्बन एरियाज के. अर्बन एरियाज मतलब अपना सिटी साइड. तो वहां पे यू विल सी द पॉपुलेशन इज हाई एंड ऑल्सो यू सी मल्टी स्टोर्ड हाउसेस बिल्डिंग्स. तो वो लोग कैसे बने होते हैं क्योंकि ऊपर बताया गांव के घर कैसे बने होते हैं विद क्ले एंड मड. तो यहाँ पे बताया दैट मॉडर्न हाउसेस दे आर बिल्ड विद सीमेंट सैंड रबल एंड वाटर एंड इवन दे आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग bricks and modern amenities. Amenities मतलब क्या? Anyone what do you mean by amenities? If you see the sentence also now you will understand कि amenities मतलब क्या होता है. Yeah, perfect. किसने बोला? Facility. Perfect. Aditya, right? Yeah. Amenities is facilities. That shops with modern facilities. तो कैसे कैसे? हाँ? मैंने नहीं बोला. Okay, who said it? I thought you said. I'm Siddesh Oh, Sajul. okay, fine. Siddesh. So yeah, modern facility. सिद्धेश दो है बच्चा. Modern facilities like shopping malls, big restaurants, etc. are found along the road. So कौन से facilities होते हैं? We have shopping malls, we have restaurants, etc. Now students started observing the distinctive characteristics of the urban area. After some time, the teacher asked Rahul to distribute the breakfast packets among the students and they had their breakfast. So जैसे हम लोग ने ऊपर देखा, they were about to have their breakfast in Solapur city. So once teacher gave brief when teacher gave big definition about the urban city, now they went to Solapur, पहुंच गए and they had their breakfast. Teachers, now we are crossing Solapur city. Once they were done with breakfast, now teacher is telling that now we are crossing Solapur city. Dear students, see the cultivation around and what do you see? Observe and tell. Okay, so the teacher is asking to see the cultivation. कि अभी हम लोग ने settlements के बारे में देखा. Now we will see about the cultivation. Children observed on both sides of the roads and started writing their observation in their notebooks. This continued for a long time. That they were observing and writing their observation in the notebook. Savitri, Madam, I find that fields are greener here. When we had left Naldurg, we have seen shrub crops and there was some sugar cane, but now I can see that it is mainly sugar cane being cultivated here. So then later on, Savitri, she shared her experience. She's like, ma'am, pehle the fields were green, but now if we see, first we have seen both the crops, like shrub crops also and some sugar cane, but now when we see only sugarcane field. So even figure 1.8 is given जहाँ पे sugarcane field का photo है. Teacher, correct. When we had left Naldurg, we had seen cultivation of moong, urad and other pulses, but now it is mainly sugarcane. This is because of the availability of irrigation facilities. So even teacher said that, yeah, your point is correct. Because when we were in Naldur, there we had seen different cultivation. There were moong, urad and other pulses. But over here, it is specifically sugarcane. Why? Because this region has a great availability of irrigation facilities. Clear to here? Yes, miss. Yes, miss. Okay. Savitri. Yes, madam, we had crossed a canal some time ago and now I can see a large reservoir here. Which is this reservoir, madam? So she had a doubt कि हम लोग ने reservoir देखा, but which is that one? So near in the
Indapur, the teacher asked the bus driver to stop at the side of the road. The students got down in a line and gathered around the teacher in a disciplined way. So this is narration के इंदापुर में मैम ने बोला bus driver को to stop at a particular side, and then the students they followed teacher and they were in a disciplined way. Teacher, refer to your maps as shown there. What you can see to our right are the backwaters of the Ujni Dam built on the river Bhima. तो टीचर उनको मैप रीडिंग पढ़ा रही है कि जो आपके मैप में आप लोग राइट साइड में देख सकते हो, दैट इज उजनी डैम which is built on the river Bhima. So even figure 1.9 they have shown a picture of Ujni Dam reservoir. This dam is mainly used for supplying drinking water. It is also used for power generation, fishing, irrigation, etc. Some students click picture of the surroundings. They boarded the bus and the journey started again. ठीक है, तो मैम ने फिर उजनी डैम का इम्पोर्टेंस बताया that dam is used for supplying drinking water. It is also used for power generation, fishing generation, etc. And students who had their phones with them और जो उन्होंने ऊपर हम लोग ने देखा जिन्होंने कैमरा लाया था, they clicked some few pictures and then they started through their journey. पूछा, मैडम दिस सीम्स टू बी अ प्लेन एरिया. तो वापस पहले एक बच्चे ने बोला था कि अंड्यूलेटिंग मतलब क्या, वेव लाइक स्ट्रक्चर था, टोपोग्राफी. नाउ दे हैव केम टू अ प्लेन एरिया. अभी वो लोग प्लेन एरिया पे है. टीचर, यस. लगा क्या रोशन, अनम्यूट. टीचर, सॉरी मिस, फोन नीचे गिर गया. Okay, no problem. Teacher, yes, we are going through a plain region. This is a part of a Deccan Plateau itself. As we go westwards, we will notice major changes in the relief and vegetation. So yeah, even teacher is correcting her that yeah, first it was undulating like wave-like structure, but now we have plain area. And this is because now we are going towards westwards. And वो बोल रहे कि जब आप westwards, अपन अभी west के तरफ जा रहे हैं, and when we'll go towards west, you will notice major changes in the relief and vegetation. After few hours of journey, they left the main road near Hadapsar and turned towards Sinhagad. There were many big and small hotels at the foothills. They stopped at an open space at the roadside and had their lunch. They relaxed for a while. तो जैसे हम लोग ने पहले देखा था, Siagarh was the spot where they were about to have their lunch. So they had their lunch. थोड़ी time उन्होंने relax किया. They found that this place had hotels, big and small hotels, and then they relaxed there for a while. Nazma, I also noticed that when we left Naldur, trees like jujube, that is boar, and babul, etc., were visible, but here different trees are seen. तो नाजमा ने वापस प्लांटेशन के बारे में बताया, वेजिटेशन के बारे में बताया. That she's like, when we were leaving Naldur, I could see trees like jujube, babul, etc. But now over here, some different kinds of trees are seen. So teacher, good. While crossing Naldur, we saw semi-arid thorny type of vegetation. Semi-arid क्या होता है बच्चा लोग? The name itself suggests semi-arid. Arid मतलब क्या? Okay, semi. बोलो. humid air. Humid air, if I'm not wrong. क्या बोला आपने? Humid air नहीं बच्चा, semi-arid. It is basically a region with a little rain. ऐसा. A place with little rain. So semi-arid, thorny types of vegetation. तो वही मैम उनको जहाँ पे थोड़ा बारिश एक्सपीरियंस होता है, वैसे जहाँ पे you cannot experience more rainfall, places which experience less rainfall. Okay, ma'am. Okay. So Naldur we saw semi-arid, thorny types of vegetation. Change in type of vegetation is an indicator of change in the amount of rainfall in that area. देखो
बराबर के वही होता है कि अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग टाइप के आप प्लांट्स क्यों देखते हो, बिकॉज वेजिटेशन ऐसे बदलता है जैसे जिस टाइप पे रेनफॉल जो एरिया में ज्यादा मिलता है या कम, उस टाइप से वहाँ के प्लांट्स डिफर करते हैं. ओके, सो अ प्लेस पे यू एक्सपीरियंस मोर रेनफॉल, there you find different types of plants, different types of vegetation. Where places which experience normal to low rainfall, वहाँ पे आप different kinds of plants experience करते हो. इसीलिए ये मैम ने उसका आंसर दिया कि जो नालदुर्ग में वो जो ट्रीज फाइंड कर पा रही थी वो अभी वो प्लेस में फाइंड नहीं कर पा रही थी. We see that Anjan, ironwood, banyan and people trees are more in number here. All right, now we have reached the foothills of Sinhagar. Now we will climb to the top and you will see the offshoots of Western Ghats. तो अभी वो लोग सिंहगढ़ फोर्ट पहुंच गए हैं and ma'am is telling that now we will climb the fort. You will only carry your eye card, notebook, pen, binoculars, जो मैंने पहले दूरबीन बोला ना, binoculars बोलते हैं उसको इंग्लिश में, camera, cap, map, and water bottle. Keep your luggage and other items in the bus itself. So ma'am is telling यही particular चीजें लेके आओ and बाकी का सब सामान बस में ही रख लो. तो what they are going to carry: eye card, notebook, pen, binoculars, camera, cap, map, and water bottle. When they started climbing the Sihagarh fort, it was quite sunny at first, then it became cloudy. Later, it also started drizzling, and students enjoyed eating steamed groundnuts, buttermilk, and curd on the way. ठीक है, मिस तो पहले या ड्रिजलिंग का मतलब क्या होता है? yeah, बस अभी मैंने पढ़ा ना बच्चा. I was about to explain that when they started climbing the Sihagarh fort, जैसे उन्होंने start किया, at the first it was very cloudy, के बहुत धूप था, sunny day था, but later on it started drizzling. drizzling मतलब हल्की सी बारिश आई, वैसा. drizzling मतलब एकदम हल्की, जो ऐसा first rain एकदम हल्का सा आता है ना, वैसा. तो drizzling is a little rain, वैसा. drizzling बोलते हैं ना थोड़ा सा बारिश आना, वैसे. So it started drizzling and थोड़ा सा बारिश आया तो बच्चे हैं, बच्चे तो खुश होंगे. And students, they started enjoying eating steamed groundnuts. Okay, कि groundnuts होता है ना जो वो बॉइल्ड किया था, तो पता है बारिश में गरम गरम खाने का मजा आता है. पकोड़ा हो गया, groundnuts हो गया, तो even students they enjoyed. Then they had buttermilk and curd on the way, क्योंकि वहां पे उनका लंच था ना, इसके लिए. They clicked photographs of various physical features, the vegetation around, birds, the aerial view of Pune city, and the various structures of the fort. Afterwards, teacher asked them to gather at one place. Okay, तो उन्होंने बहुत सारी चीजों का फोटोज भी क्लिक किया. Like the vegetation around, जो different kinds of plants था उसका, अगर birds दिखे तो उनका, aerial view जो top पे अभी मतलब they are on the way of climbing a Sihagarh fort, तो on the way जो aerial view दिख रहा है उसका click किया photos, and various structures. Teacher, we have now reached the fort of Sihagarh. How will you collect information about it? The teacher is now asking कि आप कैसे उसका information collect करोगे. Neha, madam, we saw a board on the entrance which gave us information about Sihagarh Fort. We have also clicked its picture, right? आप अगर इसमें national park जाते हो या fort जाते हो तो they have this guiding board देखा है ना सब लोग ने कि while you go to left you will find this place, while you go towards right you will find this place. See, यहाँ पे एंट्रेंस गेट का फोटो दिया है बट नॉट दैट मैप. सो नेहा इज टेलिंग कि मैम हम लोग ने वो बोर्ड का फोटो क्लिक कर लिया था, थ्रू विच वी कैन हम लोग को एक आइडिया मिलेगा कि आगे हम लोग को कैसे जाना है. एंड मैंने उसका पिक्चर भी क्लिक कर लिया है सो दैट फ्यूचर रेफरेंस में हम लोग को काम आएगा. टीचर, yeah, Neha, yes. Teacher, good Neha. Now, who will tell the difference in the relief features now? क्या मैम पूछ रही है अभी यहाँ का जो रिलीफ है, रिलीफ मैंने पहले बोला, क्या बोला मीनिंग मैंने रिलीफ का पहले स्टार्टिंग में? मिस फिजिकल फीचर्स. नहीं, रिलीफ का मैंने क्या बोला, रिलीफ फीचर्स ना, तो रिलीफ का मिस मीनिंग मैंने बोला डिफरेंट इन हाइट, हाई एंड लो.
परफेक्ट डिफरेंस इन हाइट बिटवीन हाई एंड लो पॉइंट। तो मैम वही बोल रही है कि अभी यहाँ इसका डिफरेंस मुझे कौन बताएगा? जब कासिम करके एक स्टूडेंट है वो बोल रहे हैं, मैडम वी कैन सी दैट नाउ द undulating plains have turned into rough topography with hills। तो undulating मैंने बोला था वेव लाइक स्ट्रक्चर, तो वो वही बोल रहे हैं कि जो वेव लाइक स्ट्रक्चर था that has now changed into rugged topography। What do you mean by rugged? Rugged is having uneven surface। अभी फोर्ट्स चढ़ रहे हैं ना, फोर्ट चढ़ रहे हैं वो लोग, तो फोर्ट पे कैसे you have uneven surface, so rugged is uneven surface। तो वही बोल रहे हैं वो कि now we can find uneven surface with hills। This is a high hill, we are at higher altitude and hence we can experience clouds। पता है बारिश के टाइम पे अगर आप फोर्ट यूजुअली एवरीवन गो टू ट्रैक फोर्ट्स पे जाते हैं, क्यों? बिकॉज वहां से एक तो फर्स्ट व्यू अच्छा दिखता है, सेकंड यू फील लाइक यू आर वेरी क्लोज टू द स्काई बिकॉज हाइट्स पे होता है ना वो वैसा। सो वही वहां पे बता रहा है दैट वी कैन एक्सपीरियंस clouds। Teacher, very good, Kasim. You can notice many physical features like rock pinnacles, valleys and hills and layers formed from volcanic eruption। तो मैम वही बोल रहे कि और क्या क्या आप देख सकते हो? रॉक पिनाकल्स। व्हाट डू यू मीन बाय पिनाकल्स? पिनाकल्स मतलब कैसे होता है? एक हाई पेंटेड मतलब एक हाई पॉइंट रॉक होता है जो माउंटेन से डिराइव होता है वैसे। तो यू कैन राइट हाई पॉइंटेड रॉक ऑन अ माउंटेन। के माउंटेन पे कभी दिखा है ऐसा बड़ा सा रॉक होता है? that is called as rock pinnacles। so ma'am वही बोल रही है you can experience pinnacles over here, valleys, hills, layers from and layers formed from volcanic eruption। के volcanic eruption के वजह से भी कभी कभी अगर जो layers form हुए तो ये सारी चीजें भी you can experience। you might have seen some debris of landslides at places while climbing। debris is debris क्या? anyone idea? piece of something that has been destroyed। कभी बारिश आ जाता है तो लैंडस्लाइड्स हो जाता है, या कभी कभी कोई चीज सिंस इट इज एंशिएंट फोर्ट तो कभी कभी कोई पार्ट उसका डिस्ट्रॉयड हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज डेब्रीज, अ पीस ऑफ समथिंग दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। तो मैम वही बोल रही है कि यहाँ पे यू कैन इवन एक्सपीरियंस landslides which are debris which are destroyed while you are climbing। now tell me about the agriculture pattern around। तो ये तो हम लोग ने सब physical features देख लिए। now you tell me about the agriculture pattern। Rahul, madam, this is a basalt, an igneous type of rock। We had learned about it in class 6। okay, तो राहुल ने बोला कि यहाँ पे जो basalt rock है उसके बारे में हम लोग को पता चला है and we have learned about it in 6th standard। Mary, we saw mainly pulses being cultivated at the place where we live। Between Solapur to Pune, we saw sugarcane। Now we see mainly paddy fields। okay, तो उन्होंने बोला कि स्टार्टिंग में हम लोग ने pulses देखा, फिर सोलापुर टू पुणे में हम लोग ने sugar cane देखा, and now we mainly see paddy fields। What do you mean by paddy fields? Paddy क्या होता है बच्चा लोग? पैडी का मीनिंग पता होना चाहिए। Anyone? What do you mean by paddy fields? No one? Seriously? पानी में बस पानी में जो उगते हैं ना चीजें। नहीं रे बच्चा, पैडी किसको बोलते हैं? When I say paddy fields, किसके बारे में मैं बोल रही हूँ? ठीक है, I शपथ I didn't knew paddy fields is rice fields। rice, paddy means rice। याद रखो ऐसा नेक्स्ट टाइम आना चाहिए सबको। okay, so paddy fields Is is rice rice। being brewed in water now? या राइस फील्ड्स, जो राइस ग्रो होता है ना वो उसने बराबर बोला, जो पानी में ग्रो होता है। इट्स पार्शियली राइट, बट पैडी व्हेन वी से इट रिफर्स टू राइस। ओके, सो नाउ दे आर सीइंग के अभी हम लोग सोलापुर टू पुणे में हम लोग ने शुगर केन देखा, बट यहाँ सिंहगढ़ फोर्ट पे वी कैन सी पैडी फील्ड्स। ओके टीचर, correct, it is because of the good amount of rainfall here। can you recall seeing a similar fort like structure before? what difference do you see between both of them? तो मैम वही बोलते हैं कि यहाँ पे why you can see paddy fields because they require lot of water
एंड यहाँ पे रेनफॉल अच्छे अमाउंट में है एंड दैट इज व्हाई यू कैन सी पैडी फील्ड्स। तो देखा जैसे ही बच्चे लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, मैम शी इज गिविंग द रीजन, द टेक्निकल रीजन उनका उनसे रिलेटेड। सो मैम इज टेलिंग दैट नाउ कैन यू रिकॉल अ सिमिलर फोर्ट लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा ही सिमिलर फोर्ट आपने कहीं पहले देखा है क्या, एंड इफ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो ये क्वेश्चन मैम ने बच्चे लोग को पूछा। वहीदा, Madam, we can compare this with the Naldurg fort itself, but it is not situated on a hill like Sihagarh. We do not have to climb up a slope to see it. तो वहीदा ने वही बोला कि या मैम हम सिंहगढ़ फोर्ट को नालदुर्ग फोर्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, बट द ओनली डिफरेंस, मैम ने यहाँ पे पूछा था दैट व्हाट डिफरेंस डू यू सी, सो दे आर लाइक मैम द ओनली डिफरेंस ओवर हियर इज सिंहगढ़ इज एट द टॉप ऑफ अ हिल एंड नालदुर्ग इट इज नॉट ऑन हिल। ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस। टीचर, वेरी गुड, नाउ वी हैव रीच द टॉप ऑफ द फोर्ट। ये लोग धीरे धीरे चढ़ रहे हैं एंड नाउ दे हैव फाइनली रीच एट द टॉप। This is a hill fort as it has been built on a hill. This was built with a view of security and to keep an eye on the surroundings. तो ये फोर्ट क्यों बनाया गया था? मेन तो एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए था एंड सेकंड वन कि एक सराउंडिंग्स पे नजर रखने के लिए। नालदुर्ग इज अ फोर्ट ऑन द लैंड, जैसे हम लोग ने पहले बोला कि सिंहगढ़ हाइट्स पे था, नालदुर्ग नॉर्मल प्लेन लैंड पे है। All such forts are the heritage of our state. That these forts अभी जो पहले के है, but still they are a heritage of our state. बच्चा लोग 1 मिनट में सेशन खत्म होगा, तो काइंडली ज्वाइन अगेन। फाइन, या विल कंटिन्यू। कम हियर एंड थोड़ा टाइम लगेगा सिंस इट इज अ रिकॉर्डिंग सेशन ना, तो वो सेव होता है ना, अगर मैंने बैक किया ना तो वो फिर सेशन सेव नहीं होगा, तो मुझे रुकना पड़ता है जब तक वो पूरा सेव होता है। तो इफ इट टेक्स टाइम, रहो आप लोग, निकल मत जाना। नेक्स्ट, come here and look down. The water body that you can see in front is the Reservoir of Khadakwasla Dam, which serves water to areas in and around Pune. तो मैम बोलते हैं कि यहाँ से जो नीचे आपको वाटर बॉडी दिख रहा है वो खड़कवासला डैम है। आप लोग सब गए होंगे मे बी, शायद कभी पेरेंट्स के साथ या कभी कुछ, तो आपने वहां पे खड़कवासला डैम देखा होगा।